Bismillahirrahmanirrahim. This is Masood here and welcome back to my channel Learn English with Masood. Student, today we are going to attempt another very important and interesting essay and that is for CSS students. Boys will be boys. Yes, this is a topic. Writing an outline is a crucial step to take before writing an essay, as it allows you to organize your thoughts and ideas. This step is essential not only for your understanding of the topic but also for the purpose of facilitating a comparison between your knowledge and that of the examiner. Type of this essay. The very phrase boys will be boys would likely fall under the category of an argumentative essay. इसमें आपने argue देनी है, इसकी favor में या इसके against. On this topic you have to use evidences and examples to support the arguments. Your essay should also address counter arguments, आप इसके against भी दे सकते हो, and provide refutations or rebuttals. Additionally, you may include a call to action or suggestion for how individuals or society as a whole can work toward challenging harmful gender stereotypes and promoting positive behavior and attitude towards gender discriminations. इस ऐसे में बेसिकली हमने जो मेल डोमिनेशन है सोसाइटी में ओवर फीमेल, उसके ऊपर हमने एलेबोरेशन देनी है, एग्जांपल्स कर देनी है, और फिर साथ साथ हमने इसकी कुछ रेमेडियल यानी इसको कैसे एनकाउंटर किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे. Now first we go through outline. Introduction. What does this phrase boys will be boys interpret? इसका क्या मतलब है? What to perpetuate harmful gender stereotypes includes. यानी ये जो लोगों के मेल डोमिनेशन का एक बना हुआ है उसके बारे में हमें क्या, और उसके बारे में लोग क्या ट्रेंड अपने ज़हनों में रखते हैं. सम नेगेटिव ट्रेंड्स ऑफ मेल डोमिनेशन, ये उसी से लिंक करेगा. रोल्स ऑफ वुमेन हु प्लेड लॉजिकली एंड रैशनली इन हिस्ट्री, फिर इसमें हम इसको एनकाउंटर करने के लिए फीमेल की जो कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री में, सोसाइटी में, उसके बारे में हम फिर हाईलाइट करेंगे. रोल्स ऑफ वुमेन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, type of bullying such as verbal, physical, social, sexual, cyber, racial and disability bullying. फिर हम उस मेल डोमिनेशन का जो कीवर्ड है दैट इज बुलिंग, उसकी जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, किस किस तरीके से वो अपनी डोमिनेशन को कायम रखता है. टाइप्स ऑफ बुलिंग एंड देयर ड्रास्टिक इफेक्ट्स बुलिंग ऑन द इनोसेंट माइंड, यानी इस बुलिंग से, इस डोमिनेशन से इनोसेंट जो मासूम लोग हैं उनके ज़हनों पर क्या असर पड़ता है. How can bullying be addressed to normalize the situation? फिर इसको कम कैसे किया जा सकता है. How can negative trends of male domination be harmful to an individual or to society? Are there any advantages of gender stereotypes in society? क्या इसके कोई फ़ायदे भी हैं मेल डोमिनेशन में माशरे के अंदर. फिर एंड पर हम कंक्लूड करेंगे. No passion so effectually robs the mind of all its parts of acting एंड रीजनिंग एज फियर, यानी जब इंसान को खौफ से, खौफ और हरास से उस चीज़ को डराया जाता है तो वो माशरे में इससे और बड़ा क्या नुकसान हो सकता है. ये सबसे बड़ी ताकत है, सेज एडमंड बर्ग. रीजन टू यूज द फ्रेज, दिस फ्रेज बॉयज विल बी बॉयज इज यूजुअली यूज्ड टू एक्सक्यूज और जस्टिफाई सर्टेन बिहेवियर शोन बाय बॉयज और मैन. माशरे में जो मर्द लोग अपने बिहेवियर को जाहिर करते हैं अपनी डोमिनेशन को कायम रखने के लिए, उसके लिए ये फ्रेज बोली जाती है. पर्टिकुलरली दोज दैट आर डीम्ड एज स्टीरियोटाइपिकल मैस्कुलिन और एग्रेसिव वंस, यानी जो गुस्से में रहते हैं. इट ऑल्सो सजेस्ट दैट सच बिहेवियर इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ बीइंग मेल एंड इज देयरफॉर एक्सेप्टेबल और इवन एक्सपेक्टेड. इसमें भी एक फैलेसी है कि ये मेल में ऐसे होना ही है, इसको एक्सेप्ट भी करें, इसको एक्सपेक्ट भी करें, तो उसको जस्टिफाई कर दिया जाता है कि वो मर्द है ना इसलिए गुस्सा कर सकता है. However, this phrase can also be used to
perpetuate harmful gender stereotypes. Stereotypes वो होती हैं जो मसलन घिसे पिटे बार बार एक चीज़ को कह कर हरफ आम कर दिया जाता है. And justify harmful behavior such as bullying or harassment. It implies that boys and men are not capable of controlling their action. इसमें सबसे बड़ी ये दलील दी जाती है बॉयज़ विल बी बॉयज़ में कि ये मर्द है ये अपने जज्बात को काबू में नहीं रख सकता. And reinforces the idea that certain behaviors are normal or natural for males. और ये दो लफ्ज़ कहकर कि ये नॉर्मल रूटीन है इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है. For your essay, you could explore the ways in which this phrase contributes to gender inequality and perpetuate harmful stereotypes. इससे नुकसानात क्या हुए और किस तरह मुआशरा जो है वो बिगड़ता है. You could also discuss the importance of challenging these stereotypes in this essay and promoting positive behavior and attitude towards gender. What do stereotypes include? इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? Perpetuating harmful gender stereotypes involves reinforcing ideas and beliefs about gender roles and expectations that are limiting, inaccurate, or discriminatory in society. इसको जनाब ज़्यादा इज़्ज़त एहतराम मिलनी चाहिए, इसको फ़र्क नज़र आना चाहिए. These beliefs can create many hurdles to developing an ideal society in general. The ideal and peaceful society can be established only by dint of equal participation of both gender. ये बात याद रखें कि दोनों मर्द और जो खातून हैं ये मिलकर माशरे को बनाते हैं. These stereotypes can harm individuals by creating unrealistic expectations. इसमें बगाड़ आता है माशरे में. Limiting opportunities, ख़वातीन के लिए opportunities कम होती हैं. And perpetuating discriminations and equality. और फिर माशरे में एक जो नारवा सलूक है वो कायम हो जाता है, नाइंसाफियाँ होती हैं. Some examples of harmful gender stereotype includes, for example, it is generally supposed that women are emotional and irrational. उनमें अकल नहीं होती, ये कहा जाता है, जज्बाती होती हैं ख़वातीन. While men are logical and rational, जबकि मर्द जो हैं वो बड़े मंतक से बड़ी अकल इस्तेमाल करते हैं. There have been many women throughout the history of the world who made significant contribution to science, mathematics, philosophy and other fields by using logic and reason. हिस्ट्री में अगर देखें हमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलेंगी ख़वातीन की जिन्होंने हर फील्ड में अपना किरदार अदा किया बड़ी मंतक के साथ और अक्ल के साथ. Here are some examples. इसमें एक एडा लवलेस है, a great mathematician, a writer who is known for her work on Charles Babbage. Computer, G, early mechanical general purpose computer. The analytical engine, उसमें काम किया उसने. She is considered the first computer programmer in the world. Marie Curie, a physicist, a chemist who conducted pioneering research on radioactivity. She was the first woman to receive a Nobel Prize seminar and the first person to receive 2 Nobel Prize in different fields. एक खातून ने 2 Nobel Prize ली. Hypatia, a mathematician, astronomer and a philosopher who lived in Alexandria, Egypt in the 4th century. She is known for her contribution to the study of mathematics, astronomy and philosophy. कहाँ कहाँ उसने काम नहीं किया. Ruth Bader Ginsburg, a lawyer, a jurist who was the second woman to serve on the United States Supreme Court. She is known for her work on gender equality and women's rights. She earned a huge fame in the judiciary. उसने अदालती मामलात में बहुत ज़्यादा नाम रोशन किया. Simone D. Beauvoir, a philosopher, a writer, a feminist who is best known for her book, The Second Sex, which is considered a landmark in feminist philosophy. It had a great impact on the development of women's education. These women and many others have made significant contribution to their fields using logic and reasons. बहुत सारी ख़वातीन ने काम किया.
and have helped to challenge gender stereotypes courageously, हौसले से, जवामर्दी से, and promote equality for all. अब ये जो बिलीफ जो है, ये जो मर्द का है, इस बिलीफ से, द बिलीफ इज दैट मैन शुड बी डोमिनेंट एंड अग्रेसिव, उससे गुस्से में होना चाहिए, वाइल वुमेन शुड बी सबमिसिव एंड नर्चरिंग, इसको जो है बच्चों की देखभाल करनी चाहिए. The assumptions, ये जो मफरूज़ा है, is that men are better suited for certain jobs or activities such as technology or sports, while women are better suited for other jobs such as teaching or caregiving. This proved wrong. Many women have won many gold medals in the Olympics games. नाम उन्होंने फिजिकली साबित किया. इसमें साइमन बाइल्स है एक खातून, अमेरिकन जिम्नास्ट who has won a total of 7 Olympic gold medals and is considered one of the greatest gymnasts of all times. Katie Ledecky है एक अमेरिकन स्विमर who has won a total of 6 Olympic gold medals and has set multiple world records in freestyle swimming. Alison Felix, American track and field athlete who has won a total of 9 Olympic gold medals उसने लिए ना, including 6 gold medals, and is one of the most decorated female athletes in Olympic history. No one can beat her. Serena Williams, American tennis player who has won a total of 4 Olympic gold medals and has been ranked world number 1 in single tennis 8 times. Nadia Kamene, बहुत famous नाम है, Romanian gymnast who won a total of 9 Olympic medals, including 5 gold, and was the first gymnast to be awarded a perfect score of 10 in an Olympic gymnast event. Usain Bolt, Jamaican sprinters who has won a total of 8 Olympic gold medals and holds the world record in the 100-meter and 200-meter sprint events. These women and many others have achieved great success in the Olympic Games and have inspired others with their dedication, skill and perseverance. Mustaqil mazaji, perseverance. They have surpassed many men. आगे निकल जाना, surpass. Strive not to be success, but rather to be of value, says Albert Einstein. There is another stereotype expectation है जो चल रही है, that women should prioritize their appearance and conform to certain beauty standards. उनको बनाव सगार में हिस्सा लेना चाहिए. While men are not held to the same standards, this also goes wrong because men have not left themselves behind in this field of makeup industry beauty. Moreover, it is also believed that men should not express vulnerability, यानी sensitive चीज़ों को कहा जाता है, or emotions as it is seen as weakness among women. Vulnerable वो चीज़ें होती हैं जो कि easy to touch, easy to harm होती हैं. जैसे अगर ज़ख्म है तो वहाँ पर जर्म्स जो हैं वो फौरी तौर पर अटैक कर सकते हैं. These stereotypes can be perpetuated through media, culture and social norms and can have negative effects on individual and society as a whole. इसके बहुत बुरे असरात पड़ते हैं. It is important to challenge and break down these harmful stereotypes in order to promote equality and inclusivity, यानी इसको खास नहीं रखना चाहिए, सबके लिए हो. Both women and men have considerably participated to all fields of science and technology. Both women and men have considerably participated in all fields of knowledge, including science and art. In fact, women have made significant contribution to science and technology throughout history. Despite facing many obstacles, रुकावटें, मुश्किलात and discrimination. Science is a field that is driven by curiosity. इसमें बंदे को जानने की ख्वाहिश होती है, creativity होती है,
एंड इनोवेशंस, आगे चीज़ों को इख्तरा किया जाता है, उनको तब्दील किया जाता है. सो इट इज़ आर्ट. इसी तरह आर्ट में भी तब्दीलियाँ आपको नज़र आती हैं. Both science and art involves exploring new ideas, pushing boundaries, and offering both men and women to seek knowledge, to understand the world in new and different ways. Additionally, both genders can exhibit their capabilities by getting benefits of modern study. Modern study में आप space sciences में ख़वातीन जो हैं वो भी आगे आगे हैं. No one can deny the diversity and inclusivity as different perspectives and experiences of modern sciences that can lead them to explore new insights and discoveries. Life is measured in love and positive contributions and moments of grace, says Carle Fairionia. Some negative trends of male dominations. Male domination or belief that men should hold power and control over women, उस पर अपनी धार काम रखनी है, can have many negative effects on the individual and society as a whole. Here are some negative trends that can result from male dominations. इसके कुछ negative after effects हैं, उसको भी हम देखते हैं. Gender inequality. Male domination can reinforce gender inequality where men have more power, opportunities and privileges, उसको फायदे ज़्यादा पहुँचते हैं than women. The existence of gender inequality results in unfairness within society. Violence against women. Male domination can contribute to physical, sexual and emotional violence against women, as men may see women as inferior, इसे घटिया समझा जाता है, and deserving of mistreatment, और इसके साथ नारवा सलूक करना जो है वो जायज़ है. It also creates injustice in society. Stereotyping. Male domination can perpetuate harmful gender stereotypes, such as the idea that men should be dominant and aggressive while women should be submissive, वो माने बात को, खामोश रहे and passive हो, खुद कुछ ना करे. This fallacy, ये एक वामा है, एक गलत ख्याल है, fallacy, puts a bad impact on our social life. Discriminations पैदा होती हैं. Male domination can lead to discrimination against women in various areas of life, such as education में पीछे रह जाती हैं, employment, लेकिन अब सूरत हाल कुछ बदल रही है, and politics में भी पीछे हैं. It puts drastic effects on the social and educational development of society. Mental health issues. इसी तरह ख़वातीन को नफ्सियाती तौर पर बीमार कर देते हैं मर्द हजरात. Male domination can contribute to mental health issues such as anxiety and depression, both for women who are oppressed by male domination and for men who may feel pressure to conform, follow करने से है, to traditional gender roles. अपने किरदार को कायम रखने के लिए मर्द भी पागल हो जाते हैं. It's a barrier to achieving a healthy society. तो ये एक जो है सेहतमंद माशरा जन्म नहीं लेता. फिर lack of diversity. Male domination can result in lack of diversity. वुसअत पैदा नहीं होती in leadership में, positions and other areas of society, as men are often seen as the default and women are not given equal opportunities to succeed in national and international platforms. उसको आगे नहीं आने दिया जाता. In short, it is indispensable, ये ज़रूरी है, to challenge male domination and promote gender equality in order to create a more just and equitable society for all. What do the bullying and harassment mean? यानी ये bullying और domination किस तरह वो कायम रखता है, इसमें कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करता है, इसको भी डिस्कस करें ऐसे में. Bullying and harassment are forms of aggressive behavior that can cause much harm to individuals. While they share some similarities, they differ in some important ways. Difference between bullying and harassment. इसमें क्या फ़र्क है bullying में और harassment में? Bullying is a repeated intentional behavior that is used to hurt, intimidate, मुदाखलत कर
और humiliate अगले बंदे को जिच कर कर someone who is perceived as weaker or vulnerable, sensitive है. It can take many forms including physical, verbal है, emotional है, abuse है इसमें किया जाता है, and can occur in person or online. आज का टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें भी किया जाता है. बुलिंग कैन हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स ऑन द विक्टिम. इस पर बुली की जाती है ना, दैट इज विक्टिम, इंक्लूडिंग एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड लो सेल्फ एस्टीम. इन द एज ऑफ साइंस सच टाइप ऑफ बुलिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. मोबाइल के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए थ्रेट पहुंचाए जाते हैं. हरासमेंट on the other hand refers to unwanted or unwelcome behavior that is based on a person's race, gender, sexual orientation or other characteristics. It can take many forms including verbal comments हैं, फिक्रे कह दिए जाते हैं, बुरे बुरे अल्फाज उनको कह दिए जाते हैं, मैं यहाँ यूज़ नहीं करूँगा. Physical contact or threats. Harassment can be a one-time incident or can occur repeatedly over time. It creates many psychological aftereffects on the victims, like bullying. Harassment can have negative effects on their well-being and can create a hostile मतलब होता है जालमाना, जुल्म करना, or intimidating environment. Consequently, the peace process is shattered in society. Both bullying and harassment can have serious consequences and should not be tolerated anyways. इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए. It is important for individuals and organizations to take steps to prevent and address these behaviors, such as creating safe and inclusive environment, promoting empathy, हमदर्दी उनके साथ करें, respect दें, उनको इज्जत दें, and providing resources and support for victims. टाइप्स ऑफ बुलिंग में डिफरेंट तरीके से उसको डिस्कस करें, ऐसे में कौन कौन से हैं. देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलिंग दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स अलाइक. सम आर ऑब्वियस टू स्पॉट व्हाइल अदर्स कैन बी मोर सटल, छुपे होते हैं, एंड मोर स्किलफुल. The different types of bullying that we look at below are some of the ways that bullying could be happening. Physical bullying, मारा जाता है, पीटा जाता है. Physical bullying include hitting, kicking, tripping, pinching and pushing or damaging property. Physical bullying causes both short-term and long-term damages इसमें आते हैं. Verbal bullying, मुंह से बोला जाता है. Verbal bullying includes name calling, उनके नाम रख दिए जाते हैं, ठीक है. टैक्सी कह दिया जाता है ख़वातीन को. Insults, teasings, intimidations, इसी तरह होमोफोबिक और रेसिस्ट रिमार्क्स उसको दे दिए जाते हैं, और वर्बल अब्यूज़. वाइल वर्बल बुलिंग कैन स्टार्ट ऑफ हार्मलेस, इट कैन एस्केलेट का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना, टू लेवल्स विच स्टार्ट अफेक्टिंग द इंडिविजुअल टारगेट. अपने टारगेट को अचीव करने के लिए वो ख़वातीन पर बुलिंग करते हैं, उन पर फिक्रे कसते हैं, उन पर वीडियोज़ बनाते हैं, और ताकि वो चुप कर जाए. Social bullying, sometimes referred to as covert bullying, is also harder to recognize and can be carried out behind the bullied person's back. It is designed to harm someone's social reputation. उसकी जो माशरती तौर पर एक शोहरत बनी हुई है, उसको ख़राब किया जाता है. अपने ही बंदों से उनको मास्क देकर, छुपा कर उनका जो है वो हरासमेंट की जाती है, उनके किरदार कुशी की जाती है. एंड और काज ह्यूमिलिएशन, इस तरह वो माशरे में उसको बेगुनाह बदनाम किया जाता है. सोशल बुलिंग कैन इंक्लूड, इसमें क्या क्या शामिल है? लाइंग है, एंड स्प्रेडिंग रूमर्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, RUMOURS, ठीक है ना, यू भी लगाना है. इसी तरह वो आप बिहेवियर में भी यू मिस नहीं करोगे, ठीक है. नेगेटिव फेशियल और फिजिकल जेस्चर्स एंड मेनेसिंग और contemptuous, काबिल हकारत, नफरत, looks in different ways. Playing nasty jokes to embarrass and humiliate the weaker. जोक लतीफ़े बनाए जाते हैं उन पर. Mimicking, नकल उतारी जाती है unkindly. Encouraging others to social exclude someone, damaging someone's social reputation or social acceptance.
साइबर बुलिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नेटवर्क से यानी इंटरनेट के जरिए किया जाता है, इसको कहते हैं साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग रिसर्च सेंटर्स डिफाइन साइबर बुलिंग एज इंटरनेशनल एंड रिपीटेड हार्म इन्फ्लिक्टेड थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, फोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये पॉलिटिकल टास्क को अचीव करने के लिए, लोगों के दिनों को मलाइन करने के लिए ये आजकल एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक टूल है, जिसमें लोगों को वीडियो दिखा दिखा कर, पोस्टर दिखा दिखा कर, डरा धमका कर उनके दिमाग को ख़राब किया जाता है, यानी उनके ख़िलाफ़ भी किया जाता है। साइबर बुलिंग कैन बी overt or convert bullying behaviors using digital technologies including hardware such as computers and smartphones and software such as social media, instant messaging होती हैं, text, website and other online platform। बाज़ का ये उन पर उल्टा भी पड़ जाता है। It damages the reputations very badly. Cyberbullying can happen at any time। ये किसी भी एक बड़ी प्लान तरीके से किया जाता है। अभी करंटली पाकिस्तान में जो सिचुएशन आपको नज़र आ रही है, इट्स कम्प्लीटली प्लान्ड। इट कैन बी इन पब्लिक और इन प्राइवेट एंड समटाइम्स ओनली नोन टू द टारगेट एंड द पर्सन बुलिंग। ये जब ऐसे आप लिख रहे हैं तो आपने इंटरनेशनल फोरम को जेन में रखते हुए लिखना है। साइबर बुलिंग कैन इंक्लूड अब्यूसिव और हार्टफुल टेक्स्ट, यानी तकलीफ दे जुमले कहा जाते हैं, ईमेल्स, पोस्ट लगाई जाती, इमेजेस, वीडियोस जारी की जाती हैं, डिलिबरेटली एक्सक्लूडिंग अदर्स ऑनलाइन, उनको कट ऑफ कर दिया जाता है, उनकी यूट्यूब चैनल बंद कर दिए जाते हैं, और जहाँ जहाँ एक्सेस होती है वहाँ पर वो काम किए जाते हैं। नेस्टी गॉसिप्स और रूमर्स फैला दिए जाते हैं नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, लो जी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हालांकि उसमें कोई सच नहीं होता है। ये जो ईवल और गुडनेस की जंग है ना, ये जारी रहनी है, ठीक है, क़यामत तक ये जारी रहेगी, डोंट वरी। इमिटेटिंग अदर्स ऑनलाइन और यूजिंग their logs, a judicious person never tries to damage the mental health of an innocent। इसमें जजिस का, जुडिशरी का बड़ा किरदार होता है, वो देखता है, वो इस मीडिया से इम्प्रेस नहीं होता। पर्सन बाय एनी मीन्स ही इज़ बिनाइन, वो बड़ा रहम दिल होता है विद हिज कोलीग्स एंड फेलोज who love him much। in this way it becomes two-way traffic and both can lead a healthy and prosperous, खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं in the long run। Bullying not only damages the reputation of the person being bullied, but it can also have a negative effect on the bully। बुली वो जो बंदा करता है ना, उसका भी दिमाग खराब होता है, वो भी बदनाम होता है, और जिसको पर किया जाता है वो भी तो वो भी हो ही जाता है। Live by yourself and let other live happily and peacefully। ये बहुत बड़ा फार्मूला है। खुश रहो, अपने को भी खुशी में रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो। Those who hurt others can never get comfortable and satisfactory life। They are always disturbed and on the prick of their conscience। अगर उनका ज़मीर जिंदा है तो वो हमेशा परेशान रहेंगे, और जिनका ज़मीर मुर्दा हो चुका है उनको इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं, वो अच्छाई बुराई ख़त्म कर चुके हैं। और ये दुनिया यूँ समझें कि इम्तिहान है, और यहाँ पर एक नेक लोगों को इसकी कीमत देनी पड़ती है ताकि वो अपनी पैराडाइज में जगह ले सकें। What are the effects of bullying on mental health and attitude? क्या होता है जी लोगों का, पहले इससे देखते हैं। ये डेफिनेशन आपने बुक 2 में इंटर में पढ़ी होगी। बाय एटीट्यूड वी मीन द वे वन फील्स टूवर्ड्स सम इवेंट, यानी जो इवेंट होता है उससे वो क्या उसको अपने ऊपर लेता है असर। He has his own way of thinking about some ideas or any event, however it varies from person to person, from place to place। जगह से फ़र्क पड़ जाता है ये एटीट्यूड का ना। एक बंदा जो बड़े अच्छे पोश इलाके में रहता है या बड़े डेवलप कंट्रीज़ में रहता है तो उनका बिल्कुल सोचने का अंदाज़ कुछ और होगा, और एक वो जो जहाँ पर लोगों को सरेआम मार दिया जाता है, सड़कों पर आप देखें किस तरह लोग पड़े होते हैं और लोग बेहिसी का मुजाहरा करते हुए उसके पास से गुजर जाते हैं। तो इट वेरीज फ्राम पर्सन टू पर्सन, फ्राम प्लेस टू प्लेस का इसका मतलब है। Bullying is an attitude। It is the use of strength or power to frighten, डराना धमकाना, hurt weaker people। An atrocious जालमाना person uses power in a bullying way to get the means by all means। अपने मकासद को हासिल करने के लिए वो आखिरी हद तक चला जाता है। However, how such an act affects the young and innocent mind, जो नए माइंड है, नए बच्चे मासूम, उन पर क्या असर पड़ता है ये वो नहीं समझ सकता।
so badly that their mental health, confidence level and personality growth get shattered. बिल्कुल ख़त्म हो जाती है उनकी personality. They can never regain, वो इसको हासिल ही नहीं कर सकते, their confidence levels. The person who is bullied and tortured cannot get the following valuable ends of education. कौन से हैं तीन वो बड़े बड़े पिलर्स एजुकेशन के? एक है सेल्फ स्टीम, इज़्ज़त नफ्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एतमाद एंड सेल्फ अवेयरनेस, खुद आगाही. ये एजुकेशन की जो कहते हैं ना फूल हैं, उसके असरात हैं जो बाद में नज़र आने चाहिए पढ़े लिखे बंदे के. इफ़ यू सी हरासमेंट हैपनिंग, स्पीक अप, बोलें. बीइंग हरास्ड इज टेरेबल. हैविंग बाई स्टैंडर्ड्स, साथ खड़े रहना. प्रिटेंड दे डोंट नोटिस इज, उन्होंने देखा नहीं, झूठ बोला. इज इनफाइनेटली वर्स, वो उससे भी बुरा है. जुल्म को देखने वाला और उसके खिलाफ ना बोलने वाला उस जालिम से भी बदतर है. ये हमारे हजरत अली करम अल्लाह वज का भी कौल यही है. सेज सेलेस्टी नेजी. ड्रास्टिक इफेक्ट ऑफ बुलिंग, सेल्फ स्टीम खत्म हो जाती है बच्चे में, इज्जत नफ्स, सेल्फ तोकीरी जिसे कहते हैं, खुद तोकीरी सारी, इज अ वेरी प्रीशियस ट्रेट ऑफ करेक्टर that leads the person to a high place by dint of his hard work and devotion. अपनी इज़्ज़त नफ्स को कायम रख के वो आगे का चलता है. ये बड़े बड़े माशरे में लोगों की वैल्यूज़ हैं. He not only benefits himself but also serves his nation. वो बाद में खिदमत भी करता है. बड़े बड़े नाम हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख लें. His devotion and dedication lend him honor and esteem in society. उसका काम उसको इज़्ज़त देता है. It damages his self-esteem badly, और फिर अगर वो डैमेज हो जाए बाय बुलिंग से, him and he feels himself sheer, वो टूट जाता है बहुत ज़्यादा. सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है. इज़ अनदर वैल्यूएबल ट्रेट है जो कि एक बंदे में होना चाहिए, उसका हक है करेक्टर का, करेक्टर बिल्डिंग में. दैट लैंड्स हिम मैच्योरिटी, ट्रायम्फ, सक्सेस मिलती है, उससे खुशी मिलती है. दैट नोबडी कैन सरपास, आगे निकल जाना सरपास. ही overcomes his odd circumstance, आड़ होता है बुरे हालात, and shows ability at the time honor. कभी कभी वो हिम्मत भी हार जाता है लेकिन वो नहीं हारते. He needs no undue favor, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता है, वो रिक्लिनसिएशंस पे नहीं जाता है फेवर लेने के लिए, रेफरेंस टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स. It shatters his confidence badly by bullying him and he suffers from an inferiority complex. इन चीज़ों को मैं किसी और एसेस में भी डिस्कस करूँगा जिसमें मुआशरे के अंदर पॉलिटिक्स और सियासत और रिलीजन को यूज़ किया जाता है, बट नॉट इन दिस एसे एक्चुअली. सेल्फ अवेयरनेस इज द जिस्ट, जिस्ट का मतलब होता है मगज, ठीक है, समरी, marks of his self-esteem and self-confidence that makes him know himself as well as his acquaintances, जो उसके जानने वाले होते हैं, ठीक है, अजीज़ो कारब में. This self-awareness also urges him to follow the righteous path. अपनी वो साबित कदमी, अपने वो नेक रास्ते को नहीं छोड़ता है. And always जो है वो does the right. He also loves his self-knowledge by bullying him and he feels shy and reticent. पीछे हट जाना, नुकसान होता है. If you haven't still subscribe my channel, subscribe these channels and give your valued feedback. कैसा लगा आपको ये ऐसे, इसमें क्या कुछ होना चाहिए और किस तरह के आपको ऐसे चाहिए, वो भी मुझे ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा. Thus a person should always keep in his mind that he is not alone. अकेला नहीं है जनाब. He has to keep himself up to date and humble with his fellow beings. He can do what he likes to do. He can achieve what he likes to achieve. In his life, nothing is impossible if one is determined to serve others. वो सही भी होना चाहे तो हो सकता है. Thus, one should keep in his mind that bullying destroys a person very badly. This makes him unable to keep upright and move confidently in a world of challenges. हर दिन एक नया दिन है जी, challenges आएंगी, opportunities आएंगी, क्या करोगे कल? Such insulting behavior creates irrevocable, ना ख़त्म होने वाले, ना उसको लुटाए जाने वाले, irrevocable hurdles in the development of a healthy mind. There is a holy saying that नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, those who do not love the kids and respect the elders are not included with
अस, वो हम में से नहीं है। जो बच्चों पर प्यार नहीं करता, बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो हम में से नहीं है। हम में से मतलब वो मेरी उम्मती में से नहीं है। सो लव द किड्स एंड इंश्योर आवर फ्यूचर इज सेव इन देयर हैंड्स। हाउ कैन बी बुलिंग एड्रेस्ड? अब इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बारे में भी आप कुछ अपनी सजेशन एसेस में लिखेंगे, तो फिर इसकी लेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। ऑलमोस्ट इसको 3000 प्लस होना चाहिए। बुलिंग कैन बी एड्रेस्ड इन सेवरल वेज। हियर आर सम स्ट्रेटजीज हैं, एक्शंस दैट कैन बी टेकन टू एड्रेस बुलिंग। नंबर 1 है स्पीक अप, बोलना। इस पर बात करें, बताएं। इफ़ यू विटनेस बुलिंग, स्पीक अप एंड रिपोर्ट इट इमीडिएटली टू समवन इन अथॉरिटी। जो बाब इख्तियार हैं उनको बताएं, सच एज टीचर हैं, काउंसलर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनको बताएं। सपोर्ट द विक्टिम, और जो बेचारा जिस पर जुल्म हुआ है उसकी दादरसी करें। ऑफर सपोर्ट एंड एम्पथी, हमदर्दी टू द विक्टिम ऑफ बुलिंग एंड एनकरेज देम टू सीक हेल्प फ्रॉम अ ट्रस्टेड अडल्ट इन द कंसर्न एरिया, जहाँ पर है वो इस पर इत्माद करता है। नंबर 3 में प्रमोट एम्पथी एंड रिस्पेक्ट, इज़्ज़त एहतराम का जो है वो प्रचार करें। इनकरेज पॉजिटिव बिहेवियर एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर्स एंड प्रमोट एम्पथी एंड रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस। इट मस्ट बी अ पार्ट एंड पार्सल, ये लाजम मौजूद होना चाहिए। ऐसे में ईडियम भी लाएँ, उसमें फ्रेजल वर्ब भी कुछ यूज़ करें, और इडियोमेटिक लैंग्वेज भी होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स भी होनी चाहिए उसमें आप, ठीक है। ट्रेडिशनल एजुकेशन, इतना यानी डायरेक्टली अटैक नहीं करता, हो सकता है एग्जामिनर बुरा भी बना सकता है उस चीज़ के बारे में, बट बिटवीन उसको बताते चलें बड़ी एहतियात के साथ। एजुकेट अदर्स इन अ हेल्दी वे अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बुलिंग एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड सपोर्ट फॉर दोज हु हैव एक्सपीरियंस्ड बुलिंग। उनसे बात करें जिनको पहले जुल्म हुआ है। शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस इन एन इथिकल मैनर कुड बी बेनिफिशियल, यानी इखलाकी तरीके से बात करें, क्या हुआ। क्रिएट अ सेफ एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट कायम करें लोगों के लिए जिसमें वो बात कर सकें। एवरी इंस्टीट्यूशन मस्ट क्रिएट अ सेफ एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट वेयर एवरीवन फील्स वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड, हर एक बंदे की इज्जत हो। एंड वेयर बुलिंग इज़ नॉट टॉलरेटेड, वहाँ पर इस चीज़ को बर्दाश्त न किया जाए, उसको स्नब करें। इट शुड ऑलवेज बी चेक्ड विद एन आयरन हैंड, सख्ती से मना करें। प्रोवाइड कॉन्सिक्वेंसेज फॉर बुलिंग, स्टैब्लिश क्लियर कॉन्सिक्वेंसेज फॉर बुलिंग बिहेवियर एंड enforce them consistently. This would increase awareness among the growing minds. इस ऐसे की PDF फाइल आपने डाउनलोड करनी, नीचे डिस्क्रिप्शंस में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप अभी आप डाउनलोड कर सकते हो। सीक प्रोफेशनल हेल्प इफ बुलिंग बिहेवियर परसिस्ट और इज सीवियर, सख्त हो जाए यानी नाकाबिल बर्दाश्त हो। सीक प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम अ काउंसलर और थेरेपिस्ट। हमारे यहाँ ये रवाज नहीं है कि किसी साइकेट्रिस्ट से मशवरा किया जाए, तो किया जा सकता है। हु कैन प्रोवाइड सपोर्ट एंड गाइडेंस दो दिस मेयर इज नॉट अप्रोचेबल to every segment of society. Social media can help it out. इसमें social media help कर सकते हैं. By taking these action, individuals and organizations can work towards preventing and addressing bullying behavior and creating a positive and inclusive environment for everyone. It will pave a healthy environment that society will make progress by leaps and bounds. और देयर एनी एडवांटेज ऑफ जेंडर है, आखिर में थोड़ा सा इसका लिखें कि इसके फ़ायदे क्या हैं। अप टू सम एक्सटेंट, while gender stereotypes can sometimes provide a sense of familiarity or comfort, they generally do not have any significant advantage. बाज़ औक़ात मेल तहफ़्फ़ुज़ भी देता है अपने इसी रवैये से। In fact, gender stereotypes can be harmful and limiting. इसकी हद होनी चाहिए, both for individuals and society as a whole. Here are some reasons why gender stereotypes are generally seen as negative. इस नेगेटिविटी से बचे तो वो पॉजिटिव चीज़ों को अचीव कर सकता है। They limit opportunities. Gender stereotypes can limit opportunities for individuals as they may be discouraged or prevented from pursuing certain careers or interests that are seen as not aligned with their gender. They promote inequity
Gender stereotypes promote and reinforce equity by suggesting that men and women have different roles. उसको यानी दोनों के मुख्तलिफ रोल हैं, abilities हैं and characteristics हैं, तो उन्हें काम करने दें. They harm mental health. उसके जो है gender stereotypes can harm mental health by creating unrealistic expectations, perpetuating discriminations and limiting self-expressions. They reinforce harmful behaviors. Gender stereotypes can reinforce harmful behaviors such as bullying, harassment and violence, इसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, by perpetuating the idea that certain behaviors are normal or natural for males and females. They limit personal growth. Gender stereotypes or limit personal growth and self-discovery by encouraging conformity or rigid gender role and discouraging the exploration of different identities and expression. Overall, the जी आखिर में हम देखते हैं conclusion. In conclusion, the phrase boys will be boys is often used to excuse or justify certain behavior by boys or men, particularly those that are deemed as stereotypical masculine or aggressive. However, this phrase can perpetuate harmful gender stereotypes and justify harmful behavior. उसको justify करते हैं कि ये सही है, such as bullying or harassment. It implies that boys and men are not capable of controlling their action and reinforcement. ये नहीं वो control नहीं कर सकते, ये दलील सही नहीं है. The idea that certain behaviors are normal हैं बच्चों में, boys में, are natural for males. It is important to challenge these harmful stereotypes. इनके बारे में बात की जानी चाहिए, इनको पूछताछ होनी चाहिए, and promote positive behavior and attitudes towards gender. By creating safe and inclusive environment, promoting empathy and respect, and providing resources and support for victims for bullying and harassment, we can work towards creating a society, एक ऐसा माशरा हम बना सकते हैं, where all individuals can thrive regardless of their gender. It is important to conceive that bullying is harmful, not only to the person being bullied, but also to the person engaging in the bullying behavior. Bullying can have negative consequences. इसके बुरे असरात हैं for a bullying's mental and emotional health, as well as their relationship with others. It is essential to address and prevent bullying, especially in the educational network systems, in order to create a safe and supportive environment for everyone involved. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful, says Albert Schweitzer. अगर आप खुश हैं, खुशी है, तो आप दूसरों की खिदमत कर रहे हैं, वो असल में हैप्पीनेस है. इसके टोटल वर्ड्स राउंड अबाउट 3000 प्लस हैं. इससे काम भी कर सकते हैं, कुछ इसमें अगर आप ऐड करना है वो भी ऐड कर सकते हैं. अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और कौन सा ऐसे आपको चाहिए वो भी मैं नेक्स्ट उसकी वीडियो अपलोड करूँगा. इसकी PDF फाइल आप जस्ट गूगल पे टाइप करें, बेसिक इंग्लिश ग्रामर बाय मसूद सादी, कॉन्टैक्ट है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, और अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ मैंने इसका PDF का, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक पर. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.